ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को, तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, आप देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। वो शायद अब खोल रहे हैं। पता नहीं बस is behind us also. What about the second bus? Second bus is there. After that, there is barricade. So now if you have squeeze between two, yes, two barricades. And in front there are 4 obstacles. Okay, Rahul ji, they are allowing. 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को, तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, आप देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। वो शायद अब खोल रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्या बताना है? We are giving a message that the country needs democracy, not crackdown, not police raj, not martial law. We want democracy to prevail over. So we are going to Gandhi Smriti to send that message. And the police has taken over the entire capital city. And there is a crackdown that is being planned. So we feel that MPs need to be on the streets to fight for the democracy, to fight for the students. And last several days, it's something like taking over the capital city. We claim that this is mother of democracy. Now we know what is the situation of the mother of democracy. We had all grouped here, and we are aware of the seriousness of the issue, because instead of discussing and resolving the issue just for saving Dharmendra Pradhan, they are trying to thrash the protesters. They are going to subvert the democratic system of this country. So let the whole country understand what this government stands for. The central government, union government saying that we are ready to talk, we are ready to debate. What is ready to talk? How many days they were here? 3 weeks? Did anybody go to Jantar Mandar? Even now they are not prepared to go to Jantar Mandar. We only sought the resignation of Dharmendra Pradhan. आज तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, क्या बोला है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से पिन करेगा? नीचे से ऊपर से पिन करना तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो प्राइम मिनिस्टर तो मांगना पड़ेगा, इसलिए हम दो रोड पे है। Which who? CJP. We are part of that protest. We have been going into that protest site from day one onwards. We are part of their protest. We will be with them, and to the hilt we will be with them. याद करेंगे। अरे हम जहाँ भी जाएं यार, देश हमारा है। ये कायरा पे बैठ के पुलिस को बुला के भाई डरा रहे हैं। हमारे इसमें डर नहीं है। जहाँ पर जाए
जा रहे हैं, गांधी के चरणों में जा रहे हैं, जहां गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी मार्ग, वहां जा रहे हैं। सर यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। 3-4 बसें तो आपकी, 3 बसें, 6 बसें तो पुलिस की, सीआरपीएफ की, आरएफ की खड़ी हुई है। हाँ, तो डर के मारे बैरिकेड लगाए, लेकिन सब जा रहे हैं वहां 30 जनवरी मार्ग, गांधी जी के जहाँ रहते थे। India have been raising two critical issues. They have lost faith in the examination system. The integrity of the examination system is questionable. They have lost faith in that. That needs to be fixed. Further, there has been consistent leaks in examinations. The NEET examination leak was the last straw in the camel's back. What we want is accountability to be fixed. Either the minister, the secretary, or the NTA head. Nobody is being held accountable. Nobody is held accountable for any of these successive fiascos which happen in this government. Many train accidents happen. Only low-level signalmen are held accountable. Pahalgam terror attack happens. Nobody is held accountable. Examination papers are leaked. Nobody is held accountable. We want accountability to be fixed. Well, this government takes credit for a lot of things. It must also be accountable for the failures. It is not willing to take accountability for the failures. And we also want to know what are they doing to fix the systematic repetition of paper leaks. They are saying they'll have fast-track courts. That is post-fact. After a leak happens, once after they investigate, if they catch hold of somebody, they'll take them to fast-track court. What we are asking is, what will you do to prevent the leaks? What systems are you putting in place? That nobody is explaining. So we are merely highlighting the concerns of the students of India. But sir, government has already clearly said that we are ready for the talk. Mr. JP Nadda. There are 2 points to it. One is a discussion and second is accountability. Both can go hand in hand. Accountability must also be fixed. Without accountability, because this is not a one-off incident. Successive leaks have been happening. Where is the accountability is what we are asking. But they are ready for the discussion. They are saying we are ready. As I said, there are 2 things have to happen. One is accountability and discussion. Both can go hand in hand. Why should one not happen, only one happen? I don't know. I'm told 30 January March. I'm told. I don't know. What is the plan to stay there? I don't know. How long will you stay there? Are they already planning a campaign? देखिए, ये देश गांधी का है, गांधी के असूलों का है, और उन असूलों पे छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार लगातार कई दिन से उन पर अत्याचार कर रही है। इसी संदेश को कि देश अत्याचारी सरकार का नहीं, गांधी का है, इस संदेश को लेने के लिए राहुल गांधी के सारे लोग, इंडिया लाइन के सब नेता वहां जा रहे हैं।